respected Father Francis, Father Ujur, और भी जो नॉर्थ पॉइंट स्कूल का, सेंट जोसेफ कॉलेज का स्टाफ, टीचर्स एंड जितना भी ऑफिशियल्स इन्वॉल्व है इसमें, एंड सामडन, मिस्टर सामडन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर GTA, and more importantly representative from SP Darjeeling, and most importantly जो आज का प्रोग्राम का गेस्ट जो हमारे कोविड वॉरियर्स, उनका सभी को मेरा नमस्कार. So first of all I would thank and appreciate and congratulate the efforts of initiative and efforts of North Point School and St. Joseph College, and also Darjeeling Jesuits of North Bengal and Jesuit alumni. सभी को धन्यवाद जो ये आप लोग सामने आए थे during the difficult times. We all know what we have went through. हमको second wave कोविड इतना टफ था, इतना सीरियस था. We have all seen by our own eyes. We have all felt, we have all seen. So we have number of cases were more. आपका जो फर्स्ट वेव था, फर्स्ट वेव में it was more of an urban centric phenomena. आपका सिलीगुड़ी में अफेक्ट हुआ, सिलीगुड़ी के आसपास मतीगारा, बागडोगरा एरिया में अफेक्ट हुआ, दार्जिलिंग में अफेक्ट हुआ म्यूनसिपालिटी में मेनली, एंड बिजनबारी में थोड़ा एडजेसेंट एरिया अफेक्ट हुआ, एंड करसियांग एरिया अफेक्ट हुआ, एंड अदरवाइज रूरल एरियाज वेर मोस्टली अनटच्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट वेव. So we could able to manage whatever the infrastructure we have created by our government initiative during the first wave. That time lot of panic was there, lot of kind of misconception about COVID was there, so no one was forthcoming. That time I must appreciate the efforts of our government doctors who came forward from the day one, irrespective of resistance from the family and friends and their peer groups. But the second wave was totally different. It affected the rural areas. The numbers were high, and there was, I won't say it's a crisis, but most people in the rural areas, उनका access कहाँ जाना है, किसको पास जाना है, क्या करना है कोविड होने में, वो आइडिया उनका, वो अवेयरनेस थोड़ा कम भी था. So and one more thing, if you see, most of the COVID cases were mild, still mild. Only few requires hospitalization. So our government has issued an order that NGOs can set up a kind of isolation centers, oxygen parlors, and etc. etc. So after that, lot of NGOs volunteered in Darjeeling district. So in Darjeeling and Siliguri, lot of NGOs, they have volunteered. That response was phenomenal. It's voluntary. In fact, we didn't force anyone to do anything. Our North Point School and St. Joseph College was one among them. They have came forward that we want to set up one COVID isolation center in our college. So they have outlined the idea. So क्या करना चाहता है? So then we have visited the site, and we have offered some minimum support in the form of kind of expert opinion of doctors. Otherwise, it's a fully their initiative. They have unka alumni. They have also received help from the lot of their donors. So I would thank all of them. It has come up within a very short period of time. The idea came up, then we have visited, I think within 10-15 days time. So within 10-15 days time, all the things have materialized. So the first patients
the first patient got admitted. So that's the wonderful achievement. That shows the intention जो इतना सीरियस था उन लोग ये करने के लिए. So उसके बाद बहुत फ़ायदा हुआ उनका रूरल एरिया में. जितना कुछ पेशेंट माइल्ड पेशेंट उनका हॉस्पिटल जाना नहीं चाहते. द आइडिया ऑफ सेफ होम इज सो ऑल हॉस्पिटल एटमॉस्फेयर इज टोटली डिफरेंट. थोड़ा सीरियस रहता है वहाँ. सो इसके लिए होम आइसोलेशन इट्स लाइक होम ओनली बट अंडर मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन ऑफ सम हेल्थ स्टाफ so that they can feel comfortable, they don't feel panic. So that purpose, not our safe home in St. Joseph College, that it has served the purpose very well. So a lot of people voluntarily came to this safe home. So we have also, when we contacted this patient, हमको यह admission चाहिए. So it shows the quality they have maintained throughout their operation. So मैं पहले बोल रहा था, still there is a जो I appreciated the efforts of our government doctors in the first phase. So now lot of private NGOs, private COVID, private में जो उसके लिए lot of people came forward. Still there is a kind of कोविड के लेके कुछ तो सोसाइटी में कुछ तो है. हम अगर कोविड हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, सेफो में काम कर रहे हैं, तो देयर इज़ अ फियर एंड पैनिक एंड मिसकंसेप्शन इज देयर. स्टिल नो वन विल इनकरेज सच थिंग. अगल बगल में जो फैमिली का प्रेशर तो होता है. कंसिडरिंग ऑल दिस एस्पेक्ट्स, जो जितने लोग सर्विस देने के लिए आया, आई रियली सल्यूट यू बिकॉज इट नीड्स सम काइंड ऑफ करेज, सम काइंड ऑफ inspiration to do such service. So it has now the requirement of safe home and hospitalization has come down drastically. So we have also from government side, we have also wound up some safe home operations. So कॉलेज भी, सेंट जोसेफ कॉलेज भी इनका 30 जुलाई पहले नोटिस दे दिया था. दे हैव वाइंडिंग अप देयर ऑपरेशन. So but they have provided a very, very good service, quality service. So I am thanking all those involved in this operation, right from the top and right sweeper से लेके जो cook थे, जो COVID warriors, fathers, alumni. I appreciate all of you. My sincere thanks and appreciation from the district administration side. Thank you all of you. आज आम्ही विशेष गरी आजको यो सानो कार्यक्रम हाम्रो सुस्तुलपडा कोभिड सेन्टर 60 दिनको लागि हामी सेन्ट जोसेफ कलेजमा हामी चलाएर आउँदै थियो. मे 20 तारिकदेखि जुलाई 21 तारिकसम्म. अनि आज अफिसियली हाम्रो डिएम मिस्टर पोनम्बलम अनि हाम्रो जिटिए हेल्थ मिस्टर सामदेन टुप्पा यिनीहरूको माध्यमद्वारा आज हामी कोभिड सेन्टरलाई अफिसियली हामी बन्द गरेका छौँ. अनि कतिजना भलन्टियर्सहरू, डक्टर्सहरू, नर्सेसहरू हाम्रो कोभिड सेन्टरमा 60 दिनको लागि काम गर्नुभएको थियो. उनीहरू सबैजनालाई बोलाएर उनीहरूलाई एउटा सानो फेलिसिटेसन प्रोग्राम राखेको थियो. अनि विशेष गरी आउनुभएको सबै मेहमानहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद गर्न चाहन्छु. विशेष गरी हाम्रो मिडिया दाजुभाइहरूलाई पनि, यिनीहरूद्वारा मात्रै हाम्रो कोभिड सेन्टर राम्रो चलाउन सक्यो. यिनीहरू हाम्रो लाइफलाइन हो. कोभिड सेन्टरमा के हुँदैछ, कसरी हुँदैछ, डोनर्सको बारेमा सबै मिडिया दाजुभाइहरूले मात्रै मेन स्ट्रिममा पुर्याउन सक्यो. अनि म विशेष गरी उनीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु. अनि विशेष गरी आउनुभएको हाम्रो चिफ गेस्ट मिस्टर पोनम्बलम अनि जिटिए सेक्रेटरी, जिटिए डिरेक्टर मिस्टर सामदेन अनि धेरै एनजिओजहरू आउनुभएको छ. सबैजनालाई अनि आज हामी एउटा फेलिसिटेट गऱ्यौँ. यिनीहरू सबै हामीसँग मिलेर, जेसुट फादर्सहरूसँग मिलेर यिनीहरू कोभिडको लागि काम गरेर 60 दिन आउनुभएको थियो. उनीहरू सबैजनालाई हामी आज सानो कार्यक्रममा हामी फेलिसिटेट गऱ्यौँ सबैजनालाई. यो कोभिडको थर्ड वेभ त अझै स्टिल बाँकी नै छ है. यो तपाईँहरूले बन्द गर्नुको कारण चाहिँ के हो? कोभिड सेकेन्डमा चाहिँ के भयो भन्दा अहिले चाहिँ हस्पिटल बेड्सहरू चाहिँ खाली भएको छ. अनि डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट अनि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसनले पनि यसरी स्मल कोभिड सेन्टर्सहरूलाई बन्द गरेर मेन स्ट्रिम गभर्मेन्ट हस्पिटल्सहरूलाई चलाउनु उनीहरू प्लान गर्दैछ.
बट हाम्रो वादा 60 दिन थियो अनि हाम्रो 60 दिन हामी राम्रो तरिकाले हामीले पुऱ्याउन सक्यो। आजको मिटिङमा पनि डिएमले हामीलाई निवेदन गर्नुभएको छ, जब थर्ड वेभ त्यस्तो भयो भने हामी फेरि पनि नर्थ पोइन्ट स्कुल हामी खोल्नुको लागि हामी तयार छौँ। यो 60 दिनको अवधिमा कतिजनालाई चाहिँ सर्भिस प्रोभाइड गर्नुभयो त? हामी चाहिँ 53 मान्छेहरू हाम्रो कोभिड सेन्टर्समा राम्रो स्वस्थ भएर उनीहरू आफ्नै घर फर्केको छ। यसमा के भन्नु चाहन्छ भने एकजना पनि एउटा पनि क्याजुअलिटी छैन, 100% रिकभरी रेट थियो। आउनुभएको सबै 53 मान्छेहरू अहिले पनि आफ्नै आफ्नै घरमा स्वस्थमा हुनुहुन्छ। धन्यवाद।